This conference will now be recorded. ठीक है, so today we will discuss about loops and conditions. क्या डिस्कस करेंगे आज? हाँ जी, एक मिनट। Loops and conditions. Loops and conditions. हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, करते स्टार्ट। So today we will discuss about सॉरी सर कल आप कह रहे थे कि स्टैटिक पे आप एक एग्जांपल लेंगे पहले। वो भी ले लेंगे, वो भी लेंगे। स्टैटिक पे नहीं बोला होगा, उस पे बोला होगा, कमांड ऑप्शनल आर्गुमेंट पे बोला होगा। हाँ, लास्ट में सबसे लास्ट स्टेज में था। हाँ, ऑप्शनल आर्गुमेंट का एग्जांपल होगा, वो भी लेंगे। और ये इम्पोर्टेंट आज का जो काम है ना, लूप्स एंड कंडीशन। एग्जांपल भी ले लेता हूँ। ओके, ठीक है जी। चलो, today we will discuss about loops and condition and optional argument example. ठीक है जी। हाँ सर वैसे आपने कल एक बताया तो था ऑप्शनल आर्गुमेंट का एग्जांपल, जिसमें कि हम क्रोम ड्राइवर और फायरफॉक्स को अलग अलग तरीके से वहां से भेज के ऐसे स्टार्ट कर रहे थे। ऐसे कुछ बताया तो था आपने कल। वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का था। अच्छा, हाँ, ऑप्शनल आर्गुमेंट हाँ समझ जी, गया। ऑप्शन। ठीक है, चलो तो देखो, लेट मी टेक ए एग्जांपल फॉर द ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल, we have a method. We have a method, public void method1. This method we are using at 10 places. We are calling this method how many places? How many places we are using this method? बताओ। 10 places. 10 places. We are calling this method at 10 places. Right? We are calling this method at how many places? Right? We are calling this method at 10 places. 1, 2, 3, 4, right? So how many places we are calling this method? 10 places. Now, in future, I have a requirement. I have another requirement. What is my requirement? I want to use the same method. I want to use the same method, but this time I need to pass some inputs to this method. What I will do? कोई बताएगा? What I will do? क्या करेंगे? 10 more places I need the same method. I need the same method with some inputs. क्या करूंगा, कोई बताएगा? अरे बोलो भाई। सर पैरामीटराइज्ड मेथड। क्या करेंगे बताओ। सर अगर What I get? अगर हम ऑप्शनल आर्गुमेंट्स के अलावा अगर बोलते तो वहां पर हम एक मेथड बना सकते हैं, जेनरिक मेथड। अगर वहां पर उन 10 मोर प्लेसेस में अगर उनके पैरामीटर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर सिंगल ही लेके चल रहे हैं तो वहां पे इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ,
अगर अलग अलग इनपुट चाहिए उनको तो फिर हमें अलग अलग मेथड्स बनाने पड़ेंगे। वी कैन डू द ओवरलोडिंग फर्स्ट सोल्यूशन, कर सकते हैं ना ओवरलोडिंग। व्हाट आर द रूल्स ऑफ ओवरलोडिंग? इनपुट सेम, नेम सेम, आउटपुट डिफरेंट। तो ओवरलोडिंग कर सकते हैं पहला सोल्यूशन। जी सर। राइट, वी कैन डू द ओवरलोडिंग, yes or no? We can do the overloading, yes or no? Yes, sir. Yes. What are the rules of overloading? Method name same. Same, arguments different, and output is different. Input will be different. Output can be or cannot be same. हाँ, right. First solution is we can do the overloading of the method. But for example, in my first method, there are 100 lines of code. In my second method also, there are 100 lines of code. So here we have a problem. What is the problem? Duplicate code. What is the problem here? Duplicate code. Right? Right? So here we have problem of duplicate code. So solution is that we can make that method as a optional argument method. Right? If I'm making this method as a optional, these 10 places will not impact. इन पे कोई impact नहीं पड़ेगा because they are not passing any input. And 10 more places from where I need to pass the input, I can use the same method. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? हाँ जी, yes or no? Yes, sir. Right? Guys, please give confirmation in the chat box. सर ऑप्शनल आर्गुमेंट का ड्रॉबैक तो ये भी हो सकता है ना कि हमें कोड को मैनेज करना थोड़ा टफ पड़ सकता है। नहीं देखो, आप कुछ क्या तो करोगे, सर 10 places कोड तो मैं फिर भी नहीं लिखना ही नहीं पड़ेगा ना। नहीं 10 places, these are the 10 places where input parameter is not required, where input parameter is required. In the code you can put a condition, you can put a condition. If input parameter is coming, then execute this code, else execute this code. Clear? बट ऊपर हमें 10 प्लेसेस के लिए 2 कोड तो लिखने पड़ेंगे ना 100 लाइंस के। व्हेन इनपुट पैरामीटर इज रिक्वायर्ड में नहीं, 100 कुछ लाइंस जो लिखनी कॉमन पड़ेगी। कोड है ना, कॉमन कोड है। देखो एक मिनट रुकना सब लोग, एक मिनट देना मेरे को प्लीज। एक एग्जांपल लो, चलो एग्जांपल लेते हैं एक। हाँ देखो, 10 places where you want to
execute the thing on the Chrome browser. 10 places where you want to execute the things on the Chrome browser. So you are not passing browser name as a input. You are not passing, right? Means you have written a code something like that. Browser. Here what you have written? Code of Chrome browser. Chrome browser. Now you are calling this method how many places? 10 places. 10 For places. example, 100 places. I'm using this method, right? 100 places are using Chrome as a default browser. Now there is a requirement in future, right? Browser launch plus then sign up. Now there is a requirement in future. What is the requirement in future? 100 more places you need to execute on Firefox. Now what you will do? You will create one more method and you will pass the browser name and you will write the code again. Code of Firefox plus sign up code. Yes or no? Yes. Yes, sir. This is the Yes, sir. this is the Yes, overloading. yes, yes, sir. This is the overloading. This is the overloading. Now, what is the solution? You can do simple one thing. You can make your method as a optional argument. If argument is coming, then handle which browser? Chrome. Firefox. 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 Else input are not coming, then handle the Chrome browser. Chrome browser. Chrome browser. Got it. Chrome browser. And rest of the code, sign up code is common. You can keep here. That's it. Is there any duplicacy now? No, sir. Clear? Yeah, we can use the same Yes, clear. method. Yes. So guys, please give confirmation in the chat box. दीपक, इसे हम हम्म, वो से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे बेस क्लास में आपने एक बार बताया था कि बेस क्लास में इसको कॉमन रख दिया और बाकी कर सकते टेस्ट के हैं, वो सोल्यूशन है, बिल्कुल सही है, वैसे भी कर सकते हैं. बट सिचुएशन यहाँ पे क्या थी? हियर आवर सिचुएशन was we were using that method at 100 places, right? So we can't, वहां पे भी कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकते ना. We can't stop that calling. We are consuming the method at 100 places. उस पे भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. So there should not any impact. Right now, ठीक है सर, इसका तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो विजुअलाइज कर पा रहा हूँ चीजें, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीजों को जिसको कि मैनेज हमको एक ही से करना है, बिल्कुल ज्यादा सही. बड़े कोड्स को नहीं कर पाएंगे, छोटे हाँ कोड्स हाँ को हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हाँ, कंडीशन लेके चल रही है. जैसे मान कंडीशन लीजिए कि एक हमारा कंपनी का एक सर्टेन ब्राउजर है, वहां पर अगर आप लॉग इन कर रहे हो तो वहां पे वो पासवर्ड प्लस टोकन नहीं मांग रहा है. आप पासवर्ड डालोगे हो जाएगा, लेकिन एक अगर आप डिफरेंट ब्राउजर में जा रहे हो तो आपको अब टोकन भी चाहिए. तो बिल्कुल सही अब कह वहां रहे पर हम अब दो ऑप्शंस डाल के दे सकते हैं, 3 पैरामीटर्स हो गए, और वहां पे ये भी जा सकता है कि हाँ, कि अगर हमें एक ऐसी कंडीशनल पैरामीटर भी देना पड़ेगा साथ में, जैसे कि क्योंकि वहां पे हम एरे लेके चलते हैं, तो हो. जो 0th इंडेक्स में जो भी हमारा पैरामीटर आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज चलेगी, एग्जीक्यूशन होगा उसका. बिल्कुल सही कह रहे हो. एक मिनट रुकना सब लोग यार. एक मिनट रुकना.
हाँ जी, क्या क्वेश्चन था? कुछ क्वेश्चन आया? सर जो आप ऑप्शनल आर्गुमेंट का जो आपने बताया है बिल्कुल सही, लेकिन ये कहीं ना कहीं मतलब पूरा कोड तो लगेगा इसके साथ, इफ एल्स कोई कंडीशनल तो लगाना ही पड़ेगा, राइट? लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है। एक मिनट, अपने कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, एल्स इफ कैन आल्सो बी यूज्ड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो, so now we are going to discuss about loops and condition. What do you mean by condition? If a number is even or odd, that is a condition, right? एक condition के एक number या तो even होगा या क्या होगा? Odd. odd होगा, right? If a number will be even or odd. Any doubt? तो ये क्या एक that is a condition, right? How we can pass the condition? Let me show. How we take input from the user? How we take input from the using Scanner class. Scanner class. scanner. Now here, if a percent to double equal 0 percent, what is the meaning of percent symbol? Remainder. Yes, modulus operator. That will give you the Remainder. remainder. So remainder will be, if we are dividing a number by 2, what will be the remainder? What can be the remainder? 0. 1 or 0. 0. 0 1 or or 1. 0. 0 or 1. 0 or 1, right? So double equal, what is the use of double equal? Okay. What is the use of double equal? For comparison. For the comparison, right? What is the use of double equal? For single equal? Assignment. Assigning value. Assignment. Assignment. For assignment. No, assignment operator. Assignment operator. So here what we are doing? We are comparing. After dividing the number by 2, if we are getting 0 or 1. If we are getting 0, then Even Is number. even. please enter value of a 12. If I'm executing again 13, nothing will execute. हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. Please enter value of a. Now this is if condition. In the same way we can use, this is if condition. Next one is the if else condition. How we use if else? Else number is odd plus a.
number is odd. Either if condition will execute or else condition में Else condition will execute. or else condition will execute. Right? In the same way we have else if later. For example, here we are taking marks from the user. If marks greater than or equal to 0 and marks less than 35. And का meaning क्या है? And operator. Both the condition Both must the be conditions must be true. And operator for both conditions. failed. Else if marks greater than or equal to 35 and marks less than 60, then First division. pass. Oh, pass. And 80. Marks 80, 100. And if marks less than 0 or marks greater than 100, then what will happen? Invalid. प्लीज एंटर अगेन आना चाहिए. Yes. Correct So mark. that will be a part of Invalid data. else part. At the end, else part. You can execute it. Right? Pass. Merit. Failed. Any question? Right? You guys can give confirmation in the chat box. तो आपने जो पहले वाला बताया था एक वाला परसेंटेज कौन वाला से वाला? परसेंटेज इक्वल टू 0 वाला से बताया था ना आपने. A% to double equal 0. So here we are divide. एक मिनट मैं explain कर रहा हूँ. Here we are dividing the number A value by 2 and we are getting remainder, right? Percent symbol will give, and remainder can be 0 or 1, 1. right? Clear or not clear? ओके सर. इसके बाद सर अगर 2 से डिवाइड करने पर अगर कोई भी आता है, अगर वो ऑड आता है तो वो ऑड वाला ले लेगा और इवन आएगा तो इवन वाला लेगा. ऐसे नहीं बोलोगे. 0 या 1 देगा, 0 या 1 देगा. अगर आप 0 पे 5 को इवन लेगा और 1 पे ऑड ले लेगा. एक मिनट भाई, 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा सर. बस फिर आपको क्या प्रिंट करेगा उस केस में? व्हाट इट विल प्रिंट इन दैट केस? ऑड. और सर आपने एक बार पहले बताया था 0101 वाला, वो मैं भूल गया था. हाँ जी. नाउ नेक्स्ट वन इज द nested if else. What is next one? nested if else. Nested if else. Nested if else. Right. Next one is nested if else.
So here we are taking a number from the user. If what is the syntax of nested if else? If inside if we have if else else, or if else inside else we have If else. if else, or if inside if we have if else and else we have again nested if else. This is Nested if else. nested if else. Now if a greater than 0, then check if a %2 double equal 0, else else please enter positive number. Any doubt? सर एक क्वेश्चन है, कैन वी यूज if else in else as well? Yes. Okay. I have shown, just a moment, this one. If else inside else we have if else, or we can if inside if we have if else, and this is the else of this if, or if inside if we have if else and else again we have if else. This kind of combination can be there, Got it. right? Any doubt, anyone? Now what is the use of loop? अभी एक पेंडिंग है यहाँ पे, switch case. We will discuss later on. Switch case, right? Switch case is pending here. What is the use of loop? Loop is used for the Perform repetitive actions or tasks. yes, for repetitive task, right? What is the use of loop? To perform finite or infinite repetitive tasks. Yes. There are three things required for the loop. Starting point, or we can say initialization. Second one, condition check, till which point we want to execute. Third one, Loop. increment or Decrement. decrement. Any doubt, anyone? हाँ जी, एक बार सब लोग अपडेट करो चैट में. Right? Let me discuss about the flow of the loop. एक मिनट रुकना. हाँ जी. So firstly, we will do the initialization. क्या करेंगे सबसे पहले हम? Flow of the loop. Loop कैसे चलेगा? Firstly, initialization. After that, Condition check. condition check.
After condition, if condition is false, then Increment or decrement. false, Yeah. Exit from the Condition is loop. false. Yes. out of the loop. अगर condition false है तो क्या होगा? Exit Out from of the the loop. loop. Out of the Out loop. of the loop. If condition is true, then Increment or Increment or decrement. decrement. यार क्या भाटिया जी आप भी If condition is true, then close. body of the loop will execute. Right. Sorry. Body of the loop will execute. Right. Body of the loop will execute. And after that, Increment or decrement. Right. and after that, again condition check. Condition. Right. This is the again condition check. हाँ जी एक बार चैट में अपडेट करो सब लोग. This is the loops. This is flow for of loop. the flow of the loop. Flow. कोई भी flow लूप of आपका फोर वाइल लूप. एक बार इसका स्क्रीनशॉट डालेगा कोई ग्रुप में. Yes, sir. हाँ जी सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो. एक मिनट सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो. एक मिनट रुकना यार सब लोग प्लीज. एक मिनट देना.
हाँ जी, ये क्लियर है सबको ना? नाउ देयर आर 3 type of the loops: for loop, while loop, and third one do while loop. There is another loop, that is for each loop, that we will discuss later on. हाँ जी, for loop, while loop, do while loop. अब कौन सा लूप देख रहे हैं पहले? और लूप सिंटेक्स क्या होगा? इनिशियलाइजेशन, दिस इज कंडीशन चेक, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. चलेगा कैसे? सबसे पहले क्या होगी? क्या होगा सबसे पहले? इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन आफ्टर दैट कंडीशन चेक, आफ्टर दैट if it's True false and then false. Either body of exit the or loop. body. If true or Condition false. is checked. If condition is true, body of the loop will run, and if condition is yes. false, out of the loop. What will be the output in this case? What will be the output? print What will be the welcome to output? all of you 5 Well, times. yes, exactly. Welcome to How all many of you time it will is print? repeated How many time it will five print? in Okay. 5 Right. lines. राइट. हाँ जी, लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1 to 5. 0 to 4. 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 So how many time it will print? Welcome to all of you. 5 times. Times. Now what will be the output? It will print 11 Welcome times. to all of you 11 times. 11. 11 times. 11. Now Infinite times. infinite time. चलेगा ही ध्यान नहीं. से देखो. It चलेगा ही will नहीं. not print. It will not print. It will not go. It will not go inside the loop, right? कहाँ नहीं जाएगा ये? Body of the for loop. Right. Out of the loop. Out of the loop, because condition is False. 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 तो कौन सा loop है ये आपका? For loop. For loop. Next one, while loop. अभी तो यूज कर लेंगे. Initialization. Mute कर लो भाटिया जी. Initialization. Sorry sir. एक मिनट रुकना सब लोग. एक मिनट रुकना सब लोग. हाँ जी, इनिशियलाइजेशन. ये कौन सा लूप देख रहे हैं अभी हम? While loop. While loop. Here we have condition. So this is the syntax of which loop? While While loop. loop.
एक मिनट रुकना यार। एक मिनट यार। एक मिनट रुकना यार सब लोग प्लीज, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है घर पे। हाँ जी, this is the syntax of which loop? While while loop. loop. While loop. What will be the output in this case? I am Deepak will be printed 10 times. हाँ जी, this is the syntax of which loop? While loop. While loop. While loop. While loop. What will be the output? It will print how many times? I am Deepak 10 times. 9 times. No, 10 times. 10 times. 0 to 9. हाँ, एक मिनट रुकना यार सब लोग। हाँ जी, so this is the syntax of which loop? While loop. While loop. Another loop is Do while. do while. Do while. This is the in case of do while loop. In case of do while loop, condition will check where? At the In the while loop. In the while. in case of do while loop, condition will check at the end, right? So it means do while loop will execute At least once. at least once if condition is false also. एक बार चलेगा ही चलेगा। क्यों क्यों? क्योंकि because condition will execute, condition will check at the End. And end. And loop will execute once before it. हाँ, right? किसी का डाउट?
हाँ जी, किसी का डाउट? दीपक सर, हाँ जी, सर ये जैसे आपने वेरिएबल्स पे लूप चलाया है, मेथड्स पे भी चल सकता है और कंस्ट्रक्टर्स पे भी चल सकता है। चल सकते हैं, ओके, राइट, बिकॉज कंडीशन विल चेक। अभी दिखाता हूँ। Here, what will be the output in this case? क्लियर है सबको? यस। ठीक है, तो अगर आप एक बार कंडीशन फॉल्स करके देखो, वैल्यू ऑफ ए 0। 1 हाँ जी, क्या आउटपुट आएगा? 1 आएगा, I think। 0 आएगा ना? इंक्रीमेंट पहले होगा ना, प्रिंट लेकिन कर, चलो। सर पहले प्रिंट करवा दिया, अच्छा, फिर प्रिंट होगा, कंडीशन चेक की, प्रिंट होगा। फिर यस। इंक्रीमेंट हाँ इंक्रीमेंट आया, हाँ, इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी। कुछ आपके असाइनमेंट है जो आपको करने हैं। हाँ जी, असाइनमेंट नंबर 1 क्या है? कोई रीड आउट करेगा? Swapping of two numbers using third variable. Swapping of two numbers without using third variable. A number is prime or not. A number that will be divisible by itself or 1. Those are prime हम्म numbers. So हम्म a number is palindrome or not. So एक which मिनट देना यार सब when लोग, we प्लीज। पता, हाँ, एक मिनट देना कुणाल भाई, मेरा ना थोड़ा 1 मिनट देना यार सब लोग। चलो एक बार ना यार ये करो कुणाल भाई रीड आउट, मेरे को ना निकलना पड़ेगा, मेरे थोड़ा दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो हमारी क्लास है कुणाल क्या भाई, एपीआई की? एपीआई मुश्किल की है यार क्लास क्योंकि है मैं आज? ना अभी जा रहा हूँ, एक बार ओके हॉस्पिटल जा रहा ओके हूँ ओके, थोड़ा ठीक है। दादाजी। हाँ ओके सर, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, एक बार असाइनमेंट करो, रीड आउट असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। सर वैसे कॉमन ही है, हम देख लेंगे। आपने जाना है तो चले जाओ, आप रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, बस उसी में से देख लेंगे। हाँ, एक बार मैं या तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी अभी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल, वी हैव टू स्वैप टू नंबर, राइट? We have to swap two number. For example, a value is 12 and b's value is 10. After swapping, a value should be 10, b value should be 12. Second assignment, swapping of two number without using third variable, right? Third assignment, a number is prime or not. What is prime number? Which is divisible by itself or 1. That is which number? That is which number? प्राइम Prime नंबर। number. That is which number? प्राइम प्राइम नंबर। नंबर। Prime number. Fourth one, पैलिंड्रोम। Number is palindrome or not. Its digits can be reversed. हाँ, So the number will be next one, same even if we reverse it. Armstrong number or not. right? A number is palindrome. Palindrome is reversal of the number is equal to the original number. Armstrong, sum of each digit cube.
1, 125, 27. Right? Table print. We have to print a table. Next one, Okay. factorial of a number. Next one, Fibonacci series. What is Fibonacci series? 0, 1. 0 plus 1, 1. 1, 1, 2. 1, 2, 3. 2, 3, 5. 5, 3, 8. Sum of last two number. Okay. Any doubt, anyone? Please. कैन वी यूज मतलब मेरा क्वेश्चन है कि हम एक लूप में दूसरी कंडीशन और दूसरे लूप में कर सकते कंडीशन हो, कंडीशन कर लूप सकते चला हो, कर सकते सकते हैं? हो, ओके, कर सकते हो। कोई भी लूप कोई भी कंडीशन, हाँ जी, कोई भी लूप कोई भी कंडीशन। बिल्कुल। ओके, ठीक है, कल नेक्स्ट सैटरडे में ना, पहले मैं इसकी एक बार डाउट लूंगा। मतलब आप लोग ट्राई करो जितना कर सकते हो, और पहले मैं डाउट लूंगा, उसके बाद आगे मूव करेंगे यार। अभी के लिए सर किसी का डाउट है इसमें? नो सर। सर नेक्स्ट बैच तो नहीं है सर अभी फिर? मुश्किल, नेक्स्ट बैच में नहीं, मैं निकल रहा हूँ, बस अब हॉस्पिटल निकल रहा हूँ एक बार। ठीक ठीक है सर, ध्यान रखो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक सिंकअप करते हैं, आप ध्यान रखो, ठीक है सर। एक्चुअली ना दादाजी की ओके। तबीयत, तभी तो मेरे को बार बार आप लोगों के बीच में से म्यूट करके जाना पड़ा, हाँ जी, इसी हाँ जी, हाँ चक्कर जी। में जाना पड़ रहा था। हाँ, नहीं नहीं सर, आप पहले ध्यान रखो, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखो, फिर बाद में बात। ओके ठीक है, सर, चलो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके Thank you. जी, बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके, बाय।